Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are gonna do the CSMOP questions from the year 2016-17 onwards. So let's do this. सिर्फ जो CSMOP को क्वेश्चन है सिर्फ वही डील करना है, ठीक है? Okay. In which of the following type of correspondence is a demi-official letter not? डीओ जो है वो इसमें यूज नहीं किया जाता, ठीक है? कम्युनिकेशन बिटवीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर सेंटर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर ऑफ सिमिलर रैंक कर सकते हैं, और कन्वेइंग फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए कौन करेगा? ऑर्डर यूज होता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इनको कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल्स के लिए भी आप यूज, ठीक है? डीओ लेटर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑफिस ऑफिस होगा तभी करना है, नहीं, नॉन ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर कन्वेइंग फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए आप इसको यूज नहीं करते हैं डीओ को, ठीक है? तो वेयर यू कैन फाइंड दैट सेमी ऑफिशियल लेटर. This form is generally used in correspondence by one government officer with another. Okay, the purpose of drawing his or her personal attention in an official matter. Okay, since जो है jump onto the page. Here it is. Yes, here we are. So this letter is generally used in correspondence by one government officer with another with the purpose of drawing his or her personal attention, okay, in an official matter of importance or urgency. Since demi-official letter is written in first person in a personal and friendly tone, it should be addressed by an officer to another similar level rank. ठीक है, यही आया आपका similar level rank. As far as possible, in the event of non-availability of officer of the same level at receiving the same may be addressed to an officer one or two level below the officer to whom such a communication is addressed. Given letter may be used for communicating with officers in other public office में भी है उनके, except बोल रहा है chief of constitutional authorities. In such case communication are addressed to secretary authorities. ठीक है, जैसे मान लो यूपीएससी को कर रहा है तो यूपीएससी चेयरमैन को नहीं करेंगे, यूपीएससी सेक्रेटरी को करेंगे, ठीक है? अ मिनिस्टर मे कम्युनिकेट विद अनदर मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा है मे कम्युनिकेट एट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से. एंड कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल में ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ, ये भी आया आपका, मतलब एक तरीके से आपका पूरा ही पार्ट इन्होंने दे रखा है आपका, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर आया है, ठीक है? दैट्स डन. पूरा पूरा आंसर है कि लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल्स में ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ अ डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका. नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस अ स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड नोट इज रिक्वायर्ड? क्या कहता है? स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड नोट, ठीक है? उसमें कोई एस्पेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है. इसमें कौन सा होगा आपका? डिटेल्ड स्ट्रक्चर नोट में आता है आपका डिटेल प्रॉब्लम सॉल्विंग केस हो जाएगा आपका आंसर. द करेक्ट आंसर इज दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग केस. ये वाला इसका नहीं पर्टेन है और ये सीएल वाला है तो ये भी पर्टेन नहीं करता, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलता है विच ऑफ द following unit or wings of an administrative ministry is concerned with the study of its organization, structure, method of work, and procedure with the view to suggesting reforms and improving the efficiency of organization. Okay. अभी तो ऐसा ही यू करती है सारे काम. नहीं, ध्यान से देखिएगा इसको. wing of an administrative ministry is concerned with the study of its organization. Okay. Method of work and procedure with the view of suggesting reforms and improving the efficiency of. अब ये जो है ना, ये पहले काम ये करते थे आपके जर्नल रिफॉर्म्स विंग और ONM. अब ये भी ये जो काम है, इन दोनों का काम जो है ये दे दिया आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विंग को. और SIU भी अभी भी कुछ काम करती है. ये इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर, ताकि हमने पढ़ा था इसको, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा इसमें क्या वो करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कहाँ पर है ये आपका. ये आपका 2.5 में जाएंगे अगर हम देखते हैं ना.
रिलेटेड। यस, ये यहाँ पर है आपका। बोलते designated sections handling work of O&M SW, बोलते based on the recommendations of SIU, Staff Inspection Department of Expenditure है, the O&M and IWSU जो है setup has been abolished in the ministry, while Department of Administrative Reforms and Public Government provides some initiative, incentive, information, advice, etc. The main task of evolving and implementing reform measures, देखिए क्या कहता है, यही क्वेश्चन है ना आपका। हाँ जी, the main task of evolving is the main task of evolving and implementing reform measures will continue to be the responsibility of all ministry department who may enter the job of their appropriate formation like administration coordination, ठीक है। improving the efficiency जो है reform measures with study of its organization structures, method of work, and improve with a view to suggesting reforms and improvements. Strengthening of these necessary improvements will therefore be essential government department. For O&M studies, ministry departments will be guided by DRPG or related to work measurement studies. Concern the unit will be the unit जो will be guided by staff inspection and department of, ठीक है, ऐसा ही करेगा इसको। O&M की जो स्टडीज है, और O&M स्टडीज, O&M क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टडीज है आपका, ठीक है। और मेथड स्टडीज वो जो है गाइडेड बाय DRPG, और एज वर्क रिलेटेड टू वर्क मेजरमेंट स्टडीज दैट विल बी डन बाय द गाइडेड बाय द स्टाफ इंस्पेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, SIU करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ। यहाँ पर है आपका, इसके अंदर है कि O&M की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडीज़ की, तो इट विल बी गाइडेड बाय DRPG, रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसीजर सुमोटो और ऑन रिक्वेस्ट विद a view facilitate better service. They will compile and maintain up to information functions of ministry department including the organization chart, okay, information review and rationalization of reports, simplify form standardization. The following in wings of concern with the study of its organization, organization structure. So rationalization of किया गया in procedure sumoto or on request include those into activities where the public comes into contact with the government with a view to better service delivered to the public. For these studies, they will compile and maintain updated information. Method of work. Information system review, rationalization of reports, returns, devising project to facilitate collection, transmission. This form design and control to more simplify standardization of forms of communication, a manner of processing repetitive works and procedures, the review of need for advisory body, periodic review during financial power, filing of functional design, periodic review, developing more effective and simpler systems. Record management हो गया आपका, ऑफिस लेआउट, improving the efficiency. एक जगह ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को अबॉलिश भी कर दिया गया है, और अबॉलिश करके अब ये काम जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है। Units is an administrative ministry is concerned with the study of its organization. Okay? Based on the recommendation of SIU, ठीक है, Department of Expenditure, the O&M ideas service has been abolished, and while the Department of ARP जो है
and provide some initiative, incentive, information, advice, etc. The task of evolving and implementing reform. Evolving or implementing reform will continue to the responsibility of evolving, implementing reforms. ये जो है responsibility message may interest the job to their information like this. अच्छा, evolving और implementing reform measures, तो वो काम आ गया आपका administration. Strengthening of these division for handling the government work for necessary improvements and simplification. Okay, concern will therefore be essential. Similar steps will also be taken in direction. Okay. For O&M studies, Ministry Department will be guided by DRPG. For work measurement studies जो है that will be guided by staff institution. Okay. तो क्लियर हो गया है. बट यहाँ पर अगर हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टडीज में, इसका काम क्या है? लिस्ट ऑफ फंक्शन है, रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर. अभी आप ये कह रहे हो कि SIU यूनिट के द्वारा उसको कर दिया गया है, अबॉलिश भी कर दिया गया है वो सिस्टम बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ SIU. It has been abolished in the ministry departments. अब जो है वाइल डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर ये कहता है आपका स्टडी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन. Study of its organization. Okay, professional structure and procedure to motto or on request, including those related to activities where the public comes into contact with the rationalization of structures and procedures to motto or on request. Illustrative list of functions to be performed by designated sanction. Handling work of INM studies. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स. फिर SIU क्या करती है अभी? वर्क मेजरमेंट स्टडीज जो भी है, दिल बी गाइडेड बाय SIU. तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो विंग है वो क्या काम करती है आपका? वो करता है आपका इवॉल्विंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म मेजर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ SIU की रिकमेंडेशंस पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की जो है SIU O&M SW जो है सेटअप उन्होंने एबॉलिश कर दिया है. वाइल डिपार्टमेंट ऑफ ARPG जो है वो आपसे जो है इनिशिएटिव, इंसेंटिव, इंफॉर्मेशन, एडवाइस देंगे. एंड द मेन टास्क provide some the main task of evolving and implementing reform measures will continue to the responsibilities. सिर्फ यहाँ पर evolving and reform measures की सिर्फ बात कर रहा है, वो भी उनका. लेकिन यहाँ कह रहे हैं concern with the study of its organization structure, methods of work and procedure with the view to suggesting reforms and improving the efficiency of the organization. वो काम कौन करेगा? ये दोनों ही आपका जब कर दिया गया, हटा दिया गया है इसमें अंदर, यूनिट्स और विंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री. हाँ कह तो रहा है, तो ये हटा ही दिया गया ना ये दोनों. तो O&M करेगी क्या? लिस्ट ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म बाय डेजिग्नेटेड सेक्शन. हैंडलिंग वर्क जो है INM का करेगा, जो भी कोई भी सेक्शन है. ठीक है, हाँ जी. तो विच द फॉलोइंग इंटरसेक्शन, तो वो कौन सा सेक्शन वो करेगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विंग का काम तो हो गया उसको इम्प्लीमेंट करना है. इवॉल्विंग और इम्प्लीमेंटिंग, इवॉल्व भी तो करना है. मेथड ऑफ वर्क एंड प्रोसीजर विद व्यू टू सजेस्ट फॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. इवॉल्विंग के अंदर क्या सब कुछ नहीं आता क्या? और हम इसकी बात करें, बोलता है आपका
द स्टडी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके, बोलता है rationalization of structure and procedure suo motu orient requests including those relating to activities where the public comes into contact with governmental administration with a view to facilitate better service delivery to the public. For these studies, they will compile and maintain up-to-date information concerning the organization and functions of the ministry department, including an organization chart. नहीं आ रहा मुझे समझ में, कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके अंदर. एक तो ये यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि एसआईयू ने जो है रिकमेंडेशंस पे ये जनरल रिफॉर्म्स विंग तो कुछ होती ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं. ठीक है, ओ एंड एम को ख़त्म कर दिया यार, ओ एंड एम भी ख़त्म हो गया है, और जो दूसरा वाला आपका वर्क मेजरमेंट स्टडीज़, तो वो वाली भी ख़त्म हो गई है. ठीक है, और अब जो है एसआईयू भी नहीं आएगा. कन्फ्यूजन हो रहा है सी और डी में. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, इसको ओ एंड एम को, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड एंड मेथड्स, द स्टडी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, method of work and procedure with a view to suggesting reforms and improving the efficiency of the organization. बोलता है rationalization of structure, study of its organization, rationalization of structure and procedure suo motu or on request, including those related to activities where the public comes in contact with the government with a view to facilitate better service related to the public. For these studies, they will compile and maintain up-to-date information concerning the organization and its function of the organization, including the organization chart. ठीक है, O&M स्टडीज़ करेगा इस तरह से. क्या ही रहा है आपका स्टडी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर किसने किया? O&M ने किया. ठीक है, फिर बात बोलते हैं आपका, फिर बोलता है मेथड ऑफ वर्क एंड प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक रिव्यू रैशनल ऑफ रिपोर्ट्स रिटर्न, methods of work or procedure. Okay, review, rationalize reports, return, devising project to facilitate easier collection, transmission, distribution, level 4 design and controls, define forms, method of work, procedure क्या रहेगा? The view to suggesting reforms and improving the efficiency of the organization. ये सारा काम तो जो है O&M को दे रखा है इन्होंने. The main task of evolving and implementing reform measure will continue the responsibility of ministry department. The job to their appropriate institutional coordination. लेकिन rationalization of कंफ्यूजन है यार, समझ में नहीं आ रहा जाएगा किस पे. आ रहा है ये सब. आगे चलते हैं, अभी तो नहीं आ रहा समझ. फिर ऐसे अगर जितना पढ़ा है उससे तो यही आ रहा है कि जो इवॉल्विंग और इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म मेजर्स है, सिर्फ वो काम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व करने का, और इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म मेजर्स. ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग का काम है. इस तरीके से तो ये आपका O&M में होना चाहिए वैसे, अगर हमें कहा जितना पढ़ा उसके साथ O&M में होना चाहिए इसका.
ये वो वही काम ही कर रहा है आपका, रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर सुमोटो विद अ व्यू टू फैसिलिटेट बेटर सर्विस, they'll compile up-to-date information concerning functions of ministry of department, ठीक है, including the organization chart. फिर बोलता है information system like review and rationalization of reports, returns, devising procedure to facilitate. ये भी आ गया इसके अंदर, कहीं ना कहीं प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कर रहे हैं, मैनर प्रोसेसिंग रिपीटेटिव वर्क एफिशिएंट भी बना रहे हैं इस तरीके से, पीरियोडिक रिव्यू भी कर रहे हैं, फाइलिंग फंक्शनल डिज़ाइन पीरियोडिक रिव्यू देर मोर इफेक्टिव सिंपल, रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ ये है कि कहीं एक एक जगह नहीं दे रखा, कहीं पर भी ये सब ड्राइव आउट कर सकते हैं। और वर्क मेजरमेंट स्टडीज़ का जो काम है, प्रपोजल क्रिएशन पोस्ट, टेकिंग वर्क मेजरमेंट स्टडीज इंक्लूडिंग योर प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग पोस्ट असिस्टेंट स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट, वर्क मेजरमेंट स्टडीज, drawing up and reviewing output controlling delays, annualization, the reports of ARC, the Administration Reform Commission staff reports will be held by to handle the identification of problem areas. नहीं हो पा रहा यार, सो आई थिंक इसको विदाउट हमें जंप नहीं कर सकते यार, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, तो दोबारा पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एसआईयू, ये आपका जो स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट है, तो ये कुछ डेजिग्नेटेड सेक्शंस है हैंडलिंग वर्क ऑफ, जो पहले O&M और जो भी है ना, ये कुछ डेजिग्नेटेड सेक्शंस बनाए गए हैं, कुछ यूनिट बनाई गई है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, O&M और WS एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए। तो कहता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एसआईयू, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की जो एसआईयू है, इसके रिकमेंडेशन की वजह से O&M और जो SIWSU सेटअप है वो अबॉलिश कर दिया गया है मिनिस्ट्रीज़ में, ठीक है। Now Department of Administrative Reforms or Public Grievances है, they will provide some initiatives, incentive, information, advice, etc. And the main task of evolving and implementing reform measures will continue to be the responsibility of the, यहाँ पर इवॉल्व करना और उसको इम्प्लीमेंट करना रिफॉर्म मेजर्स का, वो कंटिन्यू रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्रीज के पास में रहेगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज डिविजन फॉर हैंडलिंग द O&M वर्क फॉर नेसेसरी इम्प्रूवमेंट, अच्छा इन्हीं को strengthening of these division for handling the O&M work for necessary improvement, simplification, streamlining in administration in the ministries department concerned will therefore be essential. Similar steps will also be taken. अच्छा ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये इवॉल्व और इम्प्लीमेंटिंग का काम है ये इन्हीं के पास रहेगा, और इन्हीं का स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज डिविजन्स फॉर हैंडलिंग द O&M वर्क, ये खुद ही कह रहे हैं कि O&M हैंडलिंग द O&M वर्क फॉर नेसेसरी इम्प्रूवमेंट, सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रीमलाइनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न विल देयरफॉर बी एसेंशियल। कि ये पार्ट समझ में आया कि भाई एक तरीके से जो है सारा काम ये जो इनका जो ये कहना ही चाह रहे हैं कि जो भी काम है आपका मेन टास्क ऑफ इवॉल्विंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म मेजर्स था, दैट विल कंटिन्यू टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हु मे इंटरेस्ट द जॉब टू देयर अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज डिविजन फॉर हैंडलिंग द O&M वर्क for necessary improvement, simplification, streamlining in administration in the ministry department concerned will therefore be essential. Essential होगी, right? So similar steps जो है will also be taken in the attached for O&M studies. Ministries department will be guided by Department of Administrative Reforms and Public Governance. O&M studies के लिए, ठीक है, क्योंकि हटा दिया है अब यहाँ से। For O&M studies department will be guided by, उनको गाइड करेगा ARPG, ठीक है। एज रिगार्ड्स द वर्क रिलेटेड टू वर्क मेजरमेंट स्टडीज के कंसर्न, तो उसके लिए आपको एसआईयू आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है। हमें कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शंस देखा है टू बी परफॉर्म्ड बाय द डेजिग्नेटेड सेक्शन, ठीक है, जो भी हैंडलिंग वर्क ऑफ इंटरनल वर्क स्टडी और यूनिट्स। तो वो वाला जो सेक्शन क्या काम करेगा बेसिकली, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या उस सेक्शन का नाम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स है? ऑर्गेनाइजेशन और मेथड तो कुछ है तो होता ही नहीं ना।
ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडीज था, वे कहता है इलस्ट्रेशन ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय डेजिग्नेटेड सेक्शन। हाँ डेजिग्नेटेड सेक्शन है, हैंडलिंग वर्क ऑफ इंटरनल वर्क स्टडीज यूनिट्स, जो भी इनके काम को हैंडल करेगा, ठीक है। लेकिन वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो नहीं है ना, कन्फ्यूजन है यार, नहीं समझ में आ रहा कि जहाँ पर ये कह रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टडीज़ कहता है आपका अबॉलिश कर दिया है, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन मेथड ऑफ वर्क एंड प्रोसीजर विद व्यू टू सजेस्टिंग रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन। जब जहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात आ रही है, तो ये तो काम करता है आपका O&M स्टडीज़, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडीज़। रिव्यू भी करेगा रैशनलाइजेशन रिपोर्ट्स, रिटर्न डिवाइजिंग प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट सिंप्लीफाई फॉर्म्स को, जनरलाइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो बना ही रहा है आपकी, देखो फिर O&M होना चाहिए। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो इनका इवॉल्व और इम्प्लीमेंटिंग रिपोर्ट for strengthening of these divisions, for handling the quantum work, for necessary documents, streamlining in admin. Not clear about it, yeah. Let's move to next question. बोलता है an officer who is assigned the responsibility of another officer of comparable rank in the department during the former's absence is called, an officer who is assigned the responsibility of another officer of comparable rank in the department during the former's absence, लिंक ऑफिसर बोलेंगे यार, टेस्ट फंक्शन नहीं है, डीलिंग ऑफिसर नहीं होता, डिपेंडेंट ऑफिसर नहीं होता, लिंक ऑफिसर बोलते हैं। ये आपका शायद उसके अंदर ही दे रखा है आपका, link officer is an officer section who is assigned the responsibility of another officer of comparable rank in the department during the former's absence, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी काउंटर टू द क्लाइंट्स कस्टमर और द information regarding services rendered, yes, information regarding the standard of quality of services, and information regarding hierarchical setup of the public relations, yes, 1 2 3 तीनों है आपका। इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर आ गया आपका, दे रखा है आपका 2 पॉइंट, काफ़ी elaborate कर, information regarding services provided, ठीक है, then we have information regarding the standard of quality of service, ठीक है, then you have regarding hierarchical setup, ठीक है। आगे चलते हैं आपका, बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस, ओके, सबऑर्डिनेट ऑफिस सर्व एज रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, नो दिस इज रॉन्ग, अटैच्ड ऑफिस करता है, अटैच्ड ऑफिस जो है एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट मैटर डेल्ट बाय देम, हाँ एडवाइस कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। सबऑर्डिनेट ऑफिस जनरली फंक्शन एज फील्ड असिस्टेंट, यस, सबऑर्डिनेट ऑफिस में फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द अटैच्ड ऑफिस, यस, 2 3 4 है आपका।
इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, which one of the following statement regarding citizen charter is not correct? Okay, is not correct. Yes, this is not correct. It is not enforceable in court of law. 14.2 नंबर पर है, हम हालांकि इस पर देख भी चुके हो। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर क्या कहता है। नॉट एनफोर्स, यस दिस इज नॉट करेक्ट। who which seeks to make a department transparent according Indian, it is intended to empower citizens and clients so that they can demand government services. Government agencies could also be covered by availing the services from another. में कहता है clients could be government agencies and government employees availing the services from another government agency. Clients could be government agencies and government employees availing the services from another government agency. Services here will exclude administrative control activities, references and opinions to be provided on policy matters which cannot be disposed of within a predefined timeline. ठीक है। तो clients जो हैं also be covered for availing the services from another agency. फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन enabling formulation of a consolidated legislative program of a session should send to proposal for legislation, okay, enabling formulation of legislative program, okay, committee of subordinate legislation आ गया, then we have parliament SFS आ गया आपका, single file system. Consider the following statement regarding single file system, okay. Single file system will apply to matters which have to be referred. सिंगल फाइल सिस्टम कब करते हैं, बताया ना आपको। सिंगल फाइल सिस्टम जब आपके पास कोई आता है वो, तो will apply to matters which have to be referred by the non-secretarial organization to the department for seeking a sanction, a decision not within its delegated powers. ये एकदम करेक्ट है आपका। The file cover of the SFS case should prominently show the name of the originating NSO and likewise indicate that it follows the SFS system. SFS should invariably bear an ID number. ये मुझे नहीं पता है, लेकिन पहला वाला एकदम करेक्ट है, इतना पता है बस आपका। फाइल सिस्टम, ओके। बिफोर वी प्रोसीड टू दिस, आई वुड लाइक टू, आप इसका आंसर अगर कुछ देना चाहे तो आप दे सकते हैं। आई वुड लाइक टू गिव माई आंसर। देखिए, एस एफ एस विल अप्लाई टू मैटर्स विच हैव टू बी रेफर्ड बाय दी नॉन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर द फाइल कवर ऑफ एन एस एंड लाइकवाइज फाइल कवर ऑफ एन लाइकवाइज इंडिकेट दैट एस एफ एस फाइल नंबर। मैं इसका आंसर नंबर 1 2 3 देता है। इसका आंसर एक बार चेक कर रहे थे वैसे है क्या इसका। देखिए, सिंगल फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है।
Exactly. Then that this will apply to matters which have to be referred by the non-secretary organization to the department for seeking sanction or order. Doesn't that is within non its delegated power, जो इसकी delegated power के अंदर नहीं है, तो वही भेजेंगे आपको. The file cover of SFS should prominently show the name of the file cover of SFS जो है is should prominently show the name of the originating NSO, ठीक है, and likewise indicating the that it follows the SFS system. Third number पे SFS will need not bear an ID number or other formal method of sending, but be sent as though it is from one officer to another in the same organization. यही गलती थी आपकी. It will not bear an ID number. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो SFS जो है फाइल, तो यहाँ पर 1 और 2 तो एकदम पक्का हो गया, तो 1 2 करना. SFS जो है फाइल शुड इनवेरिएबली bear an ID number. No, need not bear an ID number or other formal method of sending. ठीक है, ID नंबर या इस तरीके से, बट विल बी सेंट एज दो इट इज़ फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. इस तरीके से भेज जाएगी जैसे कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेज रहे हैं आप. ठीक है, SFS need not be an ID number but will be is one over to another in the SFS जो file should be completed in all respects with the department to take the expediently. Hence for that every point for design is clearly brought out. All relevant corrected papers are placed on the file. Draft or sanction order to be there put up where they are required to be approved by the department. Availability of funds. The officer last dealing with SFS case, the NSO will mark it to the appropriate officer in the department by name. Policy files will, however, be referred to the department at appropriate levels to be determined by the department. As a rule, all noting in the department will be on the NSO file. All noting in the department, okay, will be on the NSO file. However, where sensitive or delicate matters in the sphere of personal policy or finance are involved, recording will be in the shadow file. ठीक है, वो shadow file में होगा, लेकिन जो all notings जो है ना, all notings in the department will be on the NSO file के अंदर होगा. That's important. ठीक है, तो ये इसी तरीके से भेज जाएगी. The file need not bear an ID number or other formal method, but will be sent though as it is. But okay, it will be sent though as it is from one officer to another in the same organization. इस तरीके से भेज जाएगी वो आपका. ठीक है, और वेयर सेंसिटिव और डेलिकेट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर है पॉलिसी में, वहाँ पर जहाँ पर भी कहीं पर भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डेलिकेट मैटर है या फिर पर्सनल पॉलिसी इशूज़ है, कोई भी फाइनेंस का कोई भी इशू इन्वॉल्व है, तो शेडो फाइल में होगा. ठीक है, देन एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एज अ कन्वेंशन द सेक्रेटेड नोटिंग ऑन SFS विल स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज. एक नए पेज आप स्टार्ट करेंगे. द नोटिंग डन सिक्वेंशली एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ नेचर रेफर्ड टू इन द 0.76. बोलता है एक्शंस टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट डिसीजन इन SFS फाइल विल बी इनिशिएटेड बाय द NSO on the file. Orders so issued should specifically state that they have received the concurrence of the government in the department concerned. Copies of every sanction order so issued by the NSO will be endorsed without fail to all officers concerned in the department. बोलता है copies of every sanction order so issued by the NSO will be endorsed without fail to all the officers concerned. ठीक है, ठीक है, तो ये वाला गलत था आपका, तो ध्यान दीजिएगा इस पर. That it will not bear any ID number. ठीक है, बोलता है फिर आगे क्वेश्चन बोलता है आपका, ये नहीं है तो लीव का है. Regarding referencing on files, okay, every page in part of the file will be every page part of the file will be consecutively or in separate series. Each item of corresponding file, whether receipt or issue, will be assigned a serial number which will be displayed prominently in red ink on the top. Each item of correspondence in a file, whether receipt or issue, will be assigned a serial number. Okay, will be displayed prominently. तो इसमें तो रेफरेंसिंग की इसमें तो होता ही नहीं है.
पॉकेटिंग होता है, बट पार्ट ऑफ इट ईच आइटम corresponds find a serial heading on the top middle portion of it. Then recorded files are put up the current file multiple alphabet hashed files for quick identification. Referring to the papers flagged the P are the relevant put in रेफरेंसिंग आता है आपका 6.7 नंबर पर. है रेफरेंसिंग बोलते हैं एवरी पेज इन ईच पार्ट ऑफ द फाइल नोट्स कॉरेस्पॉन्डेंस अपेंडिक्स नंबर्ड इन सेपरेट सीरीज. इन यहाँ पर इन पेन दे रखा है. एमओपी में पेन दे रखा है, लेकिन अगर एमओपी के अकॉर्डिंग चलें ये डिपेंड करता है. अगर रेफरेंसिंग आप लास्ट में कर रहे हैं, फाइल क्लोज हो गई है उस टाइम पर कर रहे हैं, वो तो पेन से करते हैं, तो इस पेंसिल से करते हैं. करते हो तो भी गलत है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे इसमें. बोलता है ईच आइटम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन अ फाइल वेदर रिसीट और इशू इज काइंड नंबर, तो हम डॉकेटिंग बोलते हैं. नंबर विच विल बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन रेड इंक एट द टॉप. ठीक है आपका ये क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है. When recorded files, but the paper under consideration or on a file is flagged PUC on the latest fresh receipt totaled upon as FR. If there are more than one FR, then they are flagged separately as FR1, 2, and so on. Similarly, there could be more than one PUC in a file. While flagging PUC or FR, the relevant page numbers will be quoted in the. Okay? While PUC or FR, together, while referring the papers flagged PUC or FR, the relevant page numbers will be quoted in. When referring to the paper PUC, the relevant page number will be quoted invariably in the margin. करना ही है. When recorded files are put up with the current file, the recorded files they are put up the current file multiple. Other papers in the current file are referred reflect as EB in the current file. However, the current page number attached to the one delivered by company to they should identify page numbers.
ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा, हमें इसको दोबारा से रीड करना पड़ेगा। आंसर इसका 1 2 3 4 होगा आई थिंक। यहाँ पर अगर आप रेफरेंसिंग की जब बात करते हैं तो इन पेन दे रखा है यहाँ पर, लेकिन सब कहते हैं कि ये पेंसिल से होता है। एमओपी की माने या किसकी में नहीं आता। तो ये कहते हैं यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर है। तो पढ़ लेते हैं एक बार रेफरेंसिंग क्या होता है। बोलता है एवरी पेज इन ईच पार्ट ऑफ द फाइल विद नोट्स correspondence appendings to note or appendings to correspondence is consecutively numbered in the separate series in pen. On the right top corner blank interval pages are not numbered, ठीक है। each item of correspondence in a file whether receipt or issue find number, okay, in red ink at the top middle first page, ठीक है। the paper under consideration on the file is flagged PUC, जो PUC है, or the latest fresh receipt noted upon as FR, ठीक है। जो भी पेपर अंडर कंसिडरेशन है उसको आप PUC देंगे, और जो भी लेटेस्ट फ्रेश आई रिसीट आई आपके पास तो आप देंगे FR। इफ देर आर मोर देन 1 FR दे आर फ्लैग्ड सेपरेटली एज FR1 और 2। Similarly, there could be more than one PUC in a file where while flagging PUC or FR, the relevant page numbers will be invariably coded in the margin. While flagging PUC or FR, तो आप जो है relevant page numbers will be invariably coded in the margin, वो करना ही करना है आपको। Other papers in a current file are referred to in the notes could be flagged as A, B, C. ठीक है, other papers in a current file। और इसके अलावा कोई पेपर है तो उसको आप A, B, C दे सकते हैं, ठीक है। Event in the even in the current file. However, the relevant page numbers must be given in the margin for future reference after the flags are removed. However, the relevant page number जो आपके must be given in the margin for future reference after the flags are removed. Recorded files तो एक तरीके से कह रहा है कि आपने फ्लैग वहाँ पे ABC करके कर दिया वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो नंबर वो भी आपको देना ही देना है। Recorded files and other papers put up with current file are flagged with alphabetical slips or for quick identification. जो भी आपकी रिकॉर्डेड फाइल है, ठीक है, या फिर अदर पेपर्स है, पुट अप विद द करंट फाइल के साथ आप उसको पुट अप करते हो, आर फ्लैग्ड विद अल्फाबेटिकल स्लिप्स फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन। तो भी जैसे यहाँ पर करंट फाइल की बात हो रही थी, उनको भी आप ABC दे सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है अदर पेपर्स इन करंट फाइल जो है, मान लीजिए अदर पेपर जो भी करंट फाइल के अंदर जो चल रही है आपका अदर पेपर जो है, दे आर रेफर टू इन द नोट्स कुड बी फ्लैग्ड एज ABC इवन इन द करंट फाइल, उसके अंदर आप ABC दे सकते हो। हाउएवर रेलेवेंट पेज नंबर आपको मेंशन करना है। इसके अलावा कोई रिकॉर्डेड फाइल की बात आती है या फिर उसके कोई अदर पेपर्स हैं पुट अप विद द करंट फाइल आर फ्लैग्ड विद द अल्फाबेटिकल स्लिप्स, अगर उनको अल्फाबेटिकल स्लिप्स लिखा था फॉर कोई आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आर फ्लैग्ड विद द अल्फाबेटिकल फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओनली वन अल्फाबेटिकल स्लिप विल बी अटैच्ड टू अ रिकॉर्डेड फाइल और कंपाइलेशन, ठीक है, सिर्फ एक जो है उसको अल्फाबेटिकल स्लिप उसके अंदर अटैच की जाएगी टू अ रिकॉर्डेड फाइल। Compilation, if two or more papers contained in the same file or compilation are to be referred, they should be identified by मतलब जैसे द रेलेवेंट पेज नंबर इन एडिशन टू द अल्फाबेटिकल। जैसे मान लो कोई भी आपके पास रिकॉर्डेड फाइल है, तो रिकॉर्डेड फाइल का आपको ऐसे नहीं करना कि ABCD आपने करंट फाइल में भी चला रखा है और वहाँ पर भी आप करंट फाइल वहाँ पर भी जो है ABCD चलाए जा रहे हो, नहीं। तो दिस विल क्रिएट कन्फ्यूजन। व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपकी जो रिकॉर्डेड फाइल है, जो पुरानी फाइल्स हैं, उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने उसका नंबर दिया P, ठीक है, तो अगर आपने P दिया तो फिर उसका P का 5/7 दे दिया, सॉरी P का जो कॉरेस्पॉन्डेंस दे दिया, P का 17 अपॉन कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर अगला कोई रेफर करना है तो P करके फिर दोबारा P और P, मतलब एक तरह से वो जो नंबर आपने अल्फाबेट जो असाइन किया ना वो उस रिकॉर्डेड फाइल को असाइन कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर है वो तो ऐसे कैसे सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ आपने एक अल्फाबेट उसको असाइन कर दिया उस रिकॉर्डेड फाइल को, और उस एक अल्फाबेट की वजह से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको पूरे को, ठीक है। तो एक जो रिकॉर्डेड फाइल है, अगर करंट फाइल है तो ABC दे सकते हो, अगर रिकॉर्डेड फाइल है तो उसको आपने एक नंबर एक अल्फाबेट उसको असाइन कर देना है, और विद द हेल्प ऑफ दैट वन अल्फाबेट
तो कॉरेस्पॉन्डेंस आप अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंस दे सकते हो और आइडेंटिफाई जो है ईजिली हो जाएगा, ठीक है। बोलता है इफ टू और मोर पेपर्स कंटेंट इन द सेम फाइल, तो उसको C17 से 57 इस तरीके से कर सकते हो। टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेफरेंसेस ऑफ पेपर्स कंटेंट इन अदर फाइल्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्लिप्स, जब स्लिप्स को रिमूव करेंगे द नंबर ऑफ फाइल रेफर्ड टू विल बी कोटेड इनवेरिएबली इन द बॉडी ऑफ द नोट, ठीक है। टू फाइल आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्लिप्स द नंबर ऑफ फाइल जो है रेफर्ड टू विल बी कोटेड इन द इनवेरिएबली इन द बॉडी ऑफ द नोट, नोट के अंदर लिख देना है आपको, ठीक है। एंड द रेलेवेंट पेज नंबर लिख देना है टुगेदर विद अल्फाबेटिकल स्लिप्स अटैच देयर टू, ठीक है। विल बी इंडिकेटेड ऑन द मार्जिन, ठीक है, आपको मार्जिन में भी लिख देना ये। Similarly, the number and date of order notification, the resolution, and in the case of act through revision, their brief title together with the number of relevant paragraph clause referred to will be quoted in the body of the notes, ठीक है। तो आपको body of the notes के अंदर करना, while the alphabetical slips used will be indicated in the margin, alphabetical slips को आप margin में करेंगे तो आप note के अंदर कर देंगे। To facilitate the identification of references to papers contained in other files after the removal of slips, the number of file referred to will be quoted invariably in the body of the note. So relevant page number together with alphabetical slip that is there to will be indicated in the margin, ठीक है। पेज नंबर वगैरह वहाँ मार्जिन वहाँ पे कर देना है आपको। और आपका सिमिलरली द नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर नोटिफिकेशन वो मार्जिन के अंदर कर देना। हाउएवर रूल्स एंड अदर compilation referred to in a case need not be put up if copies there are expected to be available with the officer, अगर आपको लगता है कि ऑफिसर के पास अवेलेबल है तो उसको पुट अप नहीं करना है। to whom the case being submitted, the fact of such compilation not having been put up will be indicated in the margin on the notes in pencil and as not put up, ठीक है। the fact of such compilations not having been put up, उसको भी आपको अलग से पेंसिल से लिख देना है, मान लीजिए, ठीक है। the fact of such compilation not having been put up will be indicated in the margin, in pencil से लिखना आपको नोट पुट अप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑफिसर के पास ये रूल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है तो वहाँ पे लिख देंगे नोट पुट अप, ठीक है। फ्लैग विल बी पिन्ड और स्टक पेनल्टी नीटली, सॉरी, द फ्लैग जो है विल बी पिन्ड और स्टक नीटली ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बैक साइड ऑफ द पेपर के लगाना है, ठीक है। फ्लैग वगैरह जो लगाते हैं बैक साइड लगाना है पेपर की, ठीक है ना। हम यूजली आगे तो स्टिक करते हैं विच इज रॉन्ग। So to be flagged when a number of papers put up in a case are to be flagged, number of papers to be flagged, the slips will be spread over the entire width of the file so that every slip is easy, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका रेफरेंसिंग जो है पूरा होता है। चलिए करते हैं आपका यहाँ पर जो है अगर एमओपी के अकॉर्डिंग जाएं तो ये, अगर एमओपी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ये पेंसिल ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है, और अगर इसको हम गलत माने पेंसिल वाले को तो फिर ये 1 2 3 4 होगा, कि वहाँ पे मुझे लगता है कि पेंसिल से हम करते तो पेंसिल से ही हैं, देख लेते हैं। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कैट, ओके, हैंडल्स केसेस रिलेटिंग टू पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय, फॉलोइंग कैट का ये तो the following is used for the corresponding with the ministry department with and subordinate office, लेटर यूज़ करते हैं हम इसमें, है ना। अगर हमने देख लिया है इसके अंदर सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ हो गया, हाँ, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, सेकंड रुकिएगा, विद मिनिस्ट्री एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सॉरी लेटर नहीं है यार, ये तो है ही नहीं, मिनिस्ट्री से तो ओएम करते हैं यार। बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे भी हमें यहाँ पर हमसे हुई है, तो क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस फॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग, ओएम की बात कर रहा हूँ, दैट दिस फॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजन टू अदर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कॉलिंग और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ऑफिस मेमोरेंडम इज आल्सो यूज्ड फॉर बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर कम्युनिकेटिंग टू इट्स एम्प्लॉयज, इट इज रिटन थर्ड पर्सन एंड bears no salutation, the name is phone number fax number जो होना चाहिए, however be indicated, the form is also used for seeking providing information among sections within the ministry, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज ऑफिस मेमोरेंडम। बोलता है सीजीएचएस फैसिलिटीज़, ओके, तो बोलता है आपका मोशन आ गया पर आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया, हाँ जी, ये देख लेते हैं। द कंटेंट्स ऑफ कैटेगरी रिकॉर्ड फाइल विल बी केप्ट एटलीस्ट मोस्ट 25 आर केप्ट,
तो कीप एंड माइक्रोफिल्म की आती है, यस, सिर्फ ए ओनली हो जाएगा इसमें ये। एंड देन द कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर एट द मोस्ट 25, द मोस्ट 25 years. 10.4 में है आपका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर एट द मोस्ट 25 years. Permanent preservation है for administrative purposes, okay, which have to be microfilm because they contain this number. Microfilm cover files required for permanent preservation for administrative purposes such as listed in A. Files required to be kept for at the most 25 years. Files surviving the review and taken on their attain the 25th year of life will be established from permanently attain the 25th year of life will be stamped permanently as transferred to any IO. Category A and B files will be reviewed year of their life in concern. In the context of categorization of report, files required to be kept for at the most 25 years. कंफ्यूजिंग इसलिए है कि कह रहा है ज़्यादा 25 साल के लिए ले रहे हैं। कैटेगरी बी भी मान सकते हैं। जो कैटेगरी ए है वो परमानेंट प्रिजर्वेशन है और फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन, ठीक है। हमें परमानेंट की भी जो है डेफिनेशन दे रखी है आगे जो है 25 साल की। थिंक वी नीड टू रीड दिस। एक बार देख लेते हैं यार क्या क्या होगा इसके। क्वेश्चंस यूपीएससी ऐसे नहीं बनाती यार, यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस बना। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं पता। चलिए तो बात करते हैं इसका प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग। बोलता है आफ्टर एक्शन ऑन द इशू पीरियड ऑन द फाइल हैज बीन कंप्लीटेड
Dealing officer जो in consultation with the supervisory officer should close the file and record it. ठीक है, it the appropriate category अगर वो in the case of category C also specify the retention period and the year of review. Waiting hours history non file documents indicate the number of years for retention on the file cover. Destroy or review. ठीक है, according to देगा C5 C6 जितना भी लिखना है. Then after the dealing officer specifically obtain approval of the section officer. Where necessary revise the title, get the file index, take extract of the copy, useful reference के लिए रख लेगा, add them, standing guard file के अंदर remove, find destroy them useless. They have to order or rigor value इसी नहीं है कोई complete reference in particular, mark previous and later references in the complete column. इस तरह से write the word recorded permanently in red ink. रेड इंक में लिखना है, write the word recorded लिखेंगे उन पे prominently in the file movement. Page numbers in ink, page number in ink which were earlier made in pencil. ये खुद ही कह रहा है अभी यहाँ पर, indicate page numbers and other references in ink which were made earlier in pencil. इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए क्योंकि प्रिपेयर फ्रेश फाइल कवर हैंड ओवर कर देगा एमटीएस को टू रिपेयर करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडेक्सिंग, फाइल्स विल बी इंडेक्स्ड एट द टाइम ऑफ देयर रिकॉर्डिंग. ओनली दोज फाइल्स व्हिच आर कैटेगराइज्ड इन इंडेक्स. सिर्फ ए और बी वाली फाइल इंडेक्स की जाएगी. लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड फाइल्स इन एमएस वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट. देयर इज नो नीड फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है, अगर मेटा लाइक फाइल नंबर इस तरीके से सब कुछ होगा. अगर रिकॉर्ड रिटेंशन शीट बात करते हैं, टू इंश्योर दैट फाइल्स आर नीदर परमानेंट डिस्ट्रॉयड नॉर केप्ट फॉर रिकॉर्ड लॉन्गर, डिपार्टमेंट विल क्या करेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड विच अकाउंट ऑब्जर्व करेगा सब कुछ जीएफआर के अकॉर्डिंग. इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट हाउसकीपिंग मैटर, जो कुछ भी अपने विद बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस 5 years. जो भी रिकॉर्डेड फाइल्स है दे आर केप्ट क्लियरली अरेंज होगा. ठीक है, एंड फॉर मोर देन 1 year. ठीक है, आफ्टर विच दे आर बी ट्रांसफर टू रिकॉर्ड रूम. इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्क फ्रॉम वन सेक्शन, तो वन कॉपी ऑफ दिस रिटेन बाय द सेक्शन आफ्टर taking over the files for its record and other acknowledged and return to the section transferring them. वापस भेज देंगे उनके पास. Files transferred by a section, the department room will accompany a list of files or retain one copy. Department record room जो will maintain record review register. Category C files marked for review in a particular year will be entered in the pages. They marked for that year in the files जो surviving the review undertaken on their, अब जो है files surviving the review undertaken on their 20 ट्रांसफर टू एनआई. ठीक है, फाइल सर्वाइविंग द रिव्यू, जो भी फाइल्स जो हैं जो सर्वाइव कर गई किस चीज़ के लिए, ऑन अटेनिंग द 25th year of life. Context of categorization of files required to be kept for at the most 25 years are endorsed as files surviving the review. 5 year life will be stamped prominently. ये कहता है यहाँ पे जो भी फाइल्स जिन्होंने रिव्यू के दौरान ऑन अटेनिंग द 20, जो उनको 25 साल हो गए, ऑन अटेनिंग द 25th year. ओके, यहाँ पर एट द मोस्ट 25 years, 25 साल ऑन अटेनिंग ऑफ लाइफ विल बी स्टैम्प परमानेंटली एज ट्रांसफर टू एनआई एंड सेंट टू नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया. फाइल ट्रांसफर टू एनआई जो है विल बी अकम्पनीड बाय ए लिस्ट. सब कुछ रिकॉर्ड रूम से प्रॉपर्ली वेंटिलेट होना चाहिए. रिव्यू एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक कैटेगरी सी फाइल जो भी है, category C file will be reviewed on the expiry of specified retention period and willed out unless there are sufficient grounds warranting its further retention. Justification for retaining a file will after review will be recorded on the file with the approval of the branch officer, division head. Retention after a review will be for a period of not exceeding 10 years including the period already retained. मैक्सिमम 10 साल का ही है एक तरीके से सी वाले फाइल, अदरवाइज इसको बी में कन्वर्ट कर देंगे. तो कैटेगरी ए एंड बी फाइल विल बी रिव्यूड ऑन द कैटेगरी ए और बी वाली जो है वो 25 साल में फिर उनको रिव्यू किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया. वो तो नहीं है यार, to be careful. During the 25 years of their life in consultation नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया. हाँ, आप उसको दे कैसे सकते हो, आप उसको ये कैसे कर सकते हो आप उसको. माइक्रोफिल्म तो जब तक नहीं कर रहे जब तक परमानेंट प्रिजर्वेशन के लाना हो, है ना. ओके,
होता है कैटेगरी ए और बी फाइल से भी 25 में रिव्यू किया जाएगा इनका रिव्यू द नीड फॉर रिवाइजिंग द may also be considered. ठीक है, year of review category shall be reckoned with reference to the years of closing and that of category A or B with reference to the year of opening. तो ईयर ऑफ रिव्यू होगा ना, कैटेगरी सी फाइल्स का होगा, वो कब से माना जाएगा? ईयर ऑफ क्लोजिंग से माना जाएगा। ठीक है, और रिव्यू जो है कैटेगरी ए और बी फाइल्स का विद द ईयर ऑफ ओपनिंग माना जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। बिगिनिंग इन ईच departmental courtroom will send the section that's concerned the files due for preview in that year together with list of files in the form of appendix 10.5 in 4 lots: January, April, June, September. Files received for review will be examined or under the direction of no longer required तो डिस्ट्रिक्ट कर देंगे इनको। Files will not be destroyed even if document file have completed their prescribed life with the approval of concerned joint secretary head जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। After review, the person with the responsible section will make entry to the revised categorization. ठीक है, और डिपार्टमेंट कोड रूम जो है ट्रांसफर फाइल सर्वाइव रिव्यू नेशनल आर्काइव। ठीक है, जो भी है ट्रांसफर कैटेगरी ऑफ ए एंड बी फाइल्स जो है तो 25वें साल में उनके पास भेज देते हैं। ये कहते हैं द कंटेस्ट ऑफ कैटेगराइजेशन कोर्स फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर द मोस्ट और एट द आर कोर्स एंड दोनों ही होना तो क्योंकि ए और बी फाइल दोनों होती है ना। ट्रांसफर कैटेगरी ए फाइल सर्वाइविंग द रिव्यू की बात करते हैं आपका केस ऑफ अदर फाइल। Joint secretary may review every half year the state of recording, reviewing, weeding out of files। ठीक है, तीन जो भी द फॉलोइंग recording file will like routine फाइल जो है मैनुअली ऑन कर दिया जाएगा। क्लासिफाइड फाइल्स को श्रेडर से और सीक्रेट फाइल्स को श्रेडर से करने के बाद उसको इंसिनेट। ठीक है, सीक्रेट फाइल्स को क्लासिफाइड फाइल्स फाइल का और जो NAI है एंड द NIC आर द नोडल ऑफिसर फॉर डेवलपिंग अ मॉडल फॉर यूज। ठीक है, quarterly progress report on recording and reviewing of files। When a paper or file is given to the minister for any other purpose, the PSC minister will be informed what is further moment signed requisition form files obtained by section of the files obtained from by a section from the department government office file happens by the file direct to the requisition attorney but route to the department to which it belongs। ठीक है, it has been only if the requisition file is one that has been microfilmed or printed normally or a microfilmed or printed copy and not the original issued to the requisition department as obtained by a department for more than 1 year except with the letter। तो इसमें हमें जो समझ में आया है इसके अंदर आंसर जो होगा ए और बी होगा। Files required to be kept at most 5 years are endorsed as तक रहती है तो बी फाइल और ऐसे क्योंकि उन्हीं के तो एक तरीके से 25 साल के बाद वो NAI भेज दी जाती है तो बोलते हैं फाइल्स required to be kept for at the most 25 years are endorsed as
keep and microfilm, keep and do not microfilm. कीप एंड माइक्रोफिल्म थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि 25 वहाँ पर क्या कैटेगरी जो ए फाइल्स होती है ना, उसमें टाइम का तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ ये बोला कि जो भी परमानेंट प्रिजर्वेशन की फाइल्स हैं, ठीक है, तो बेरस मिनिमम या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की फाइल है, उन्हीं को ही हम फाइल्स विच क्वालिफाई फॉर परमानेंट पर्पजेज एंड विच हैव टू बी माइक्रोफिल्ड बिकॉज दे कंटेन दिस। 25 साल के बाद वहाँ पर भेजी जाती है। The importance having 10 years, receiving 10 years टू बी, तो कैटेगरी बी तो होएगी कम से कम, यानी कि ये बात तो है कि टू तो कम से कम पक्का है अगर 25 साल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो। अब कैटेगरी फील बी का मीनिंग है दैट कीप बट डू नॉट माइग्रेशन, दिस कैटेगरी विल कवर फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस such as those in part 1 part A of appendix 2. Record for of value for administrative purposes, okay. For evidence of rights obligation against the government, paper containing evidence of rights or obligation of or against the government, title of property, claims for compensation not subject to time limit, formal instruments such as awards, scheme, papers into major policy decisions. Then we have including into preparation of legislation. Again, roll that papers regarding constitution functions, committee and lasting precedents, rules, regulations, salient feature of organization. The record of historical importance वगैरह जैसे origin of paper link to origin of a department agency accomplished, तो भी data हो गया, and to change of a policy. यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रही है यहाँ पर कि 10, ये बात तो पक्का है कैटेगरी सी फाइल्स को जब 10 साल से ऊपर होता है तो उसको आप कैटेगरी बी में शिफ्ट कर देंगे, और कैटेगरी बी के अंदर ही है आपका, कैटेगरी बी और ए के अंदर ही आता है, ऊपर वाला कैटेगरी ए आ रहा है, नीचे वाला कैटेगरी बी आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर मोस्ट 25 साल के लिए आर एंडोर्स एज, दोनों करते हैं क्योंकि हम ए और बी फाइल्स को ऐसा करते हैं, साल के बाद तो इनको एन आई भेज दें, एन आई भेज देते हैं। ये तो हम इसको दोनों ही देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पब्लिक अकाउंट देन वी हैव सिटीजन चार्टर, द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स व्हाइल ड्राफ्टिंग monitoring and publication of explicit standards, full and accurate information and the project to be swift and effective remedy offered if a regular system of consultation, ये ये चेक कर रहे हैं। Okay? A swift and effective charter
है आपका 14.2 क्या था आपका एलिमेंट ऑफ दिस सेटिंग मोड swift and effective remedy to be afforded if things go wrong. Regular system of consultation with the users. By the vision statement, mission and details of business and by the government service offered timeline for service indicates the standard identified level operation for details of customer clients service provided by to each one details of grievance relation or date of issue कहता है एलिमेंट setting monitoring of explicit of service setting आउट लग रहा है इसके अंदर setting monitoring and full and accurate information language about the service regular हिस्ट्री टू इसमें सेटिंग करता है ठीक है एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस को मॉनिटर करने का थोड़ी ना ऐसा डाइसी क्वेश्चन मतलब जहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड आया था बस डाइसी लगने लगा
तरीके से हमारे यहाँ हमारा to question number 15. यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन हुआ था the design the file should not pass through नंबर 7 है आपका यहाँ पर declassified considered fit for permanent classified will be transferred to ना रखा है कोई नहीं आपका 13.3 में आपका दे रखा है 11 आपके 4 होने चाहिए पर देख चुके हैं 26
13 number कहता है which of the following forms of government is meant for the officers of equivalent level in this central secretariat, meant for the officers equivalent level in the I think it's यो ही चलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ राइट ये होना चाहिए नहीं then we have office में होगा आईडी नोट का तो होता है which of these are called no noting cases, no noting cases जो ephemeral cases होते हैं ना और 18 है that the level of desk functioning depend on in coverage of work, nature and complexity of work, in work, nature and complexity आंसर बी आएगा डेस्क फंक्शन जो होता है ना अंदर आ जाएगा कोई भी एक अंडर सेक्रेटरी सीनियर सेक्शन ऑफ डेस्क फंक्शन डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू द डेस्क ठीक है नेचर ऑफ रिस्पॉन्स द लेवल डेस्क डिपेंड अपॉन लेवल okay he or she examines and submits case independent to the next one and has the power decision making level depend upon the nature and complexity of work, intelligence and hard work, nature and comprehension of work, of the response attached to the desk.
department and by rank इसका जो हम तरफ से जो इनकम now consider the space planning activity space planning activity. नहीं consider the following statement context of various stages of record management. For the exercise judicial control over the creation. For the exercise judicious control over the creation of records, maintenance of the record. Consider the following context of various stages of records management. Okay, reading out of the records that have outlived their utility. Maintenance of record. Various stages of record management. A judicious control over the creation. Okay, maintenance. Modification of records in accordance with and out of the records that have outlived. होना चाहिए तो है आपका
CSMOP का ही। ठीक है, द प्रिंसिपल इज फॉर अंडरटेकिंग वर्क मेजरमेंट स्टडीज, वर्क मेजरमेंट स्टडीज इन गवर्नमेंट ऑफिस, वर्क मेजरमेंट स्टडीज WSE होता है। फिर ये जो स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट है, फिर इसका काम क्या रहेगा? काम क्या रहेगा स्टाफ इंस्पेक्शन? आपने वो IWS भी कर दिया जो है। फॉर अंडरटेकिंग वर्क गवर्नमेंट ऑफिस, वर्क मैनेजमेंट वाला जो है ये गाइड करता है, गाइड किया था SIU के द्वारा। कंफ्यूजन है यार, प्रिंसिपल एजेंसी क्या होगा फॉर वर्क मेजरमेंट स्टडीज इन गवर्नमेंट ऑफिस इज उन्हें प्रिंसिपल फॉर अंडरटेकिंग वर्क मेजरमेंट स्टडीज इन गवर्नमेंट ऑफिस इज
प्रिंसिपल supervisor are expected to by setting having regular one to the पक्का है ये जो है informal meetings में 1 3 4 4 is the right answer क्या बोलते हैं आप as per the dynamic feature of non kinetics equal to QC is what paper under consideration 6 क्या होता है यार देख लेते study of a certain body movement and gestures serve as a non-verbal communicator this body movement and gestures तो इस तरीके से हमारा ये वाला पेपर भी कंप्लीट होता है then we move to last paper 2014 वाला जो पेपर टोटल मिनिस्ट्री about the union normally rest president भाई generally the lowest organization department of the world this is the following and character yes are attached to the department of the final decision at the level of undersecretary to a party is later have been given but getting the director drawing of the permanent the approval of an office grant of leave to ascend grant of leave करेगा भाई within the context of casual leave casual leave is governed under आती है absent right आप इस तरह से आंसर होगा is the following are of अभी हमने नहीं किया है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है therefore discharge owing to the operation
Officer holding of estimate for a guide. ये rules है, जो भी यार देख रहे हैं। इसी टाइम जो है यूपीएससी मैंने पढ़ा डाके तक कभी किसी क्वेश्चन सच तो ऐसा ही लगा। तो कोई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आया आपका। Both of which of the following are recording at least routine papers categorizing the file. Okay, and indicate title on file and attachments in their review file. Recording activity चारों याद है आपका। The form of announcement of division of policy
Public announcement. आपका resolution. Which document take the place of voluminous old files put up for reference and is capable of being put up at short notice? Instrument is standing up. Which document take the place of voluminous old files put up for reference? Card file पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहती है. Which show the following statement regarding standing note are correct? Is in one part only. Standing note contains a paper shared on type subject. Etc. of no paper present. Photos are to be note को करने. कार्ड फाइल के अंदर ही होता है.
It is in one part only. Reference देता है वैसे can easily have access to important files and continue noticing the history development of the policy, complete background material for review next policy, preparing replies to parliament question. Is prepared on a type subject. It is prepared on an item which is difficult to comprehend required for the reference for historical importance. Historical importance. मतलब standing note जो है is helpful in retrieval of important files on the subject to which a note pertains, as it contains reference to important previous files. It contains reference, okay, to important concerning the subject. Okay? Reference. By reference, standing note. By reference, one can important files and look at them without. नहीं theory है गया. Fourth आपका absolutely right है. So 1 or 3. It is in one part. It is in one part only. Okay? और ये कहता है it is prepared on type subject. I would say C is answer. Guys can check one. Some haphazard manner में question. Sir, work unit within a department में present desk बोलते हैं इसको. क्यों नहीं कहते? Sir, oriented work in a department with a specific task assigned to it. Yes. An officer on the work within a department task assigned. Okay. Action means the basic work unit. The basic work unit within a department is for running of items work desk के बारे में पूछ. Important question.
So the next question, collection of information files, compilation of data in given forms, opening of files, maintenance of current files, and are among of collection of information and files, compilation of data in given, opening of files, maintenance of current files, and collection of I'll give this a answer लगाऊंगा यार अपने अगले क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रहता है यार। This, thank you so much and have a great day.